फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं. द एक्सप्रेशन फॉर द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ ए जेफेट इज. नाउ so we have different option. Now this question is solved with the help of Shockley equation. तो Shockley equation क्या थी जेफेट के लिए? IDS, the drain to source current is the drain to source saturation current 1 minus VGS upon VP का whole square. Now the conductance is what? The change in current, the change in drain to source current upon change in VGS. So क्या करते हैं हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू VGS. So differentiating this equation with respect to VGS, so it is del IDS, yeah, just it is del of IDS upon del VGS equals to, so IDS is constant and it is 1 minus VGS की power 2, that is comes out to be 2, and then when differentiate with respect to VGS it is minus of BP, so it is minus 1 upon BP. So इसको start कर लेते हैं. This is called GM, then it is minus 2 IDSS upon BP 1 minus VGS upon BP. Now this expression, this value is known as the maximum conductance, that is called GM naught. So this is the correct expression of the conductance of a JFET. So match करिए. GM equals to GM naught 1 minus VGS upon BP. 1 minus VGS upon BP is given in C option. That is given in C option. Now, next question देखते हैं. Junction field effect transistor. The drain current can be approximated as. Now, the drain current and the gate to source voltage is given by the Shockley equation, and the Shockley equation we have also written in that question. So that is called to ID equals to IDS as 1 minus VGS upon BP का स्क्वायर. सो दिस इज योर शॉकले इक्वेशन. चेक करिए कौन से ऑप्शन में दे रखी. सो ID इक्वल्स टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन BP का स्क्वायर इज गिवन इन ए ऑप्शन. सो फॉर दैट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ट्रांस कंडक्टेंस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए जेफेट. सो अगर हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस GM इज चेंज इन IDS अपॉन चेंज इन VGS. It is VGS, it is change in delta VGS, that is equals to GM naught 1 minus VGS upon VP. That is the formula related to transconductance of a JFET. Now it is low, its value is low, and it is order of millisiemen, so it is 1 millisiemen. क्लियर है यहाँ तक. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ड्रॉबैक ऑफ ए जेफेट इज इट्स हाई इनपुट इंपीडेंस. गलत बात है. जो जेफेट है या मॉसफेट है इनका इंपीडेंस का ऑर्डर जो 100 मेगा ओम टू 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 9 मेगा ओम. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. लो इनपुट इंपीडेंस, ये जो हाई इनपुट इंपीडेंस है दैट इज एडवांटेज बिकॉज इट रिक्वायर लेस input bias current. Low input impedance, it is wrong because it is having high input impedance. Higher noise, no, it is having lesser noise because here the only one charge carrier exists. So अगर हम बात करें BJT, it is more noisy, but जो JFET या FET है it is lesser noisy because it is having only one type of charge carrier. So it is also wrong. So the correct option is D. Clear है यहाँ तक. अब ये कैसे हुआ ये जरा समझिए. Now JFET is having lower voltage gain because its conductance is low. Its conductance is low because this gain is, the voltage gain is directly proportional to GM. When GM is low, the gain is low. Clear है यहाँ तक. So that's why its option D is करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. द गेन ऑफ एन जेफेट एम्पलीफायर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग FM, GM, RD and none of these. So if you remember the gain of a JFET is directly proportional to GM and GM is low, the conductance is low, that's why the gain of a JFET is low. Clear? So the main reason to affect the JFET amplifier gain is what? The transconductance. So the correct answer is B. Now next question for a JFET, the VGS is 4 volt, IDSS is 6 ampere, ID is 3 ampere. Calculate the pinch off voltage PP. So solution is what? Now we have
Stokely equation has ID equals to IDSS 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर. नाउ ID कितना दिया है हम लोगों को? ID दिया है 3 एम्पियर एंड IDSS is 6, so 3/6 इक्वल्स टू 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर. क्लियर है यहां तक? सो अप्लाई करते हैं. 3/6 इट इज 1/2, सो 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस VGS अपॉन BP का होल स्क्वायर. क्लियर है? नाउ जस्ट टेक इट इज रूट, दैट इज अगर हम इसको देखें तो 1 माइनस VGS अपॉन VP का अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो इट इज 1/2 √2 एंड 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707. क्लियर है यहाँ तक? नाउ वी हैव 1 माइनस VGS अपॉन VP इक्वल्स टू 0.707. सो VGS अपॉन VP इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.707. देन VGS VP, we require VP ना, so VP upon VGS is equals to 1 upon 1 minus 0.707. Then we require VP, so VP equals to VGS upon 1 minus 0.707. Now put VGS equals to how much? VGS is 4 volt, then 4 divided by 1 minus 0.707. This comes out to be 13.65 volts. So for this question, the correct answer is A. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now 7th और 8th क्वेश्चन देखते हैं. What is the value of drain current of a Jfet at VGS minus 4 volt? Take saturation drain current of 20 milliampere and pinch of voltage of minus 8 volt. So solution देखते हैं. According to what the Stokely equation, ID equals to IDSS 1 minus VGS upon VP का whole square. So IDSS is how much? IDSS is take the saturation current of 20 milliampere. 20 milliampere. 1 minus VGS is how much? VGS, the pinch of voltage is this, and VGS is minus 4, so it is plus 4. Then it is VP is minus 4. Sorry, minus 8 volt. It is minus. So overall, it is minus. So 1 minus it is 1/2. So it is 1 minus 1/2. It is 1/2. So ID equals to 20 into 1/2. That is what? I think it is correct now. So 1/2. Okay, sorry, it is square also. So 1/2 का square also into 20. So it is 1/4. So it is 1/4. So it is 5 milliampere. Clear? So 5 milliampere is given in D option. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा वो डी करेक्ट होगा. नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं. द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ एन चैनल जंक्शन फैट इज VP. The pinch of voltage of N channel junction FAT is VP, that is minus 4 volt. The drain to source saturation current IDSS is 2 milliampere. Its transconductance for an applied gate to source voltage of minus 2 volt is. ठीक है ना. So अगर transconductance की definition है तो GM equals to delta IDS upon delta VGS at VDS constant. ठीक है. तो सबसे सिंपल क्या करें, पहले IDS को सॉल्व कर लेते हैं. ID that is equals to IDSS 1 minus VGS upon BP का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो IDS कितना है? 2 milliampere, 2 milliampere. Then VGS is how much? VGS is minus 2, so it is plus, and so it is minus ही रहेगा. ये VGS is 2 and it is 2 upon 4 का स्क्वायर. सो 1/2 1 माइनस 1/2 1/4. सो 2 into 1/4. सो इट इज 1/2. सो इट इज 0.5 milliamp. इट इज नॉट एम्पियर, इट इज इन मिली एम्पियर. क्लियर है? सो ID की वैल्यू आ गई. नाउ VGS इज हाउ मच? VGS is how much? minus 2 volts. So GM is IDS upon VGS. So 0.5 milliampere divide by how much? 2. So it is 50% का half, that is 25% to 0.25. 0.25 is given on the option here. 0.25 milliampere per volt is given. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो B बिल्कुल करेक्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो 10th क्वेश्चन लेते हैं. Jfet has the following parameter: IDSS 32 milliampere, VGS of -8, VGS is -4.5. Calculate the drain current 0.6125, 61.25, 61.25 and 0.0625 milliampere. Now
बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने कराए हैं, ID इक्वल्स टू IDSS1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर. नाउ दिस VP इज आल्सो कॉल्ड VGS ऑफ. क्लियर है यहाँ तक? नाउ so just apply the value 32 milliampere, that is 10 to the power minus 3. 1 minus VGS is how much? VGS is minus, that is VGS is minus, then it is also minus, so minus, so 4.5 divided by 8, that is square. If when you solve this value, you come to the conclusion that 6.125 milliampere. Just solve it, you will get this answer. So आंसर क्या सही होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिस्टर कंडक्टेंस GM. सो द ट्रांजिस्टर कंडक्टेंस GM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ करंट एंड टेम्परेचर. सी ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. लास्ट ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ करंट एंड टेम्परेचर. तो देखते हैं जो कंडक्टेंस है, द कंडक्टेंस GM इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन drain to source current to change in VGS when the VDS is constant. VDS is constant. So from that GM is directly proportional to what? The drain to source current. Clear है? Now next thing is what? Temperature. So it is inversely proportional to temperature. क्योंकि temperature बढ़ता है तो इनका कंडक्टेंस क्या होता है? घटता है. So for this question the correct answer is A. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 11th और 12th क्वेश्चन लेते हैं. द वैल्यू ऑफ द ट्रांस कंडक्टेंस एट ए बायस वोल्टेज ऑफ 0 वोल्ट फॉर द Jfet व्हिच इज हैविंग IDSS 9 milliampere and VP is -3 volt is. So if you remember the GM is equals to -2 IDSS upon VP 1 minus VGS upon VP. यही फॉर्मूला था. That's called maximum conductance is GM naught. Clear है? So bias voltage कितना है? Gate to source voltage is given to you 0 volt, so it is -2 into IDSS is 9 milliampere and BP is how much? -3. So 1 minus 0 upon BP is how much? -3. So it is 0. So it is get 1. So it is 3 3s are 3 1 3 3 3s are 9. So it is -6 millisiemens. Is there any option of 6 millisiemens? Yes, so correct answer is B. Now next है the transconductance curve of a Jfet is. Now so if you remember the transfer characteristic, it is the curve of drain to source current versus the VGS. So if you see this curve is like that, this curve is like that, so this curve is similar to parabolic curve. Clear है? So for that question we have the D option. Now if you have basic knowledge, then ID equals to IDSS1 minus VGS upon VP का square, then you see this relation ID equals to the function of VGS का square, then Y equals to 4A square or 4X square. If you see, that is the parabolic equation. That's why the transconductance curve or the transfer characteristic of a Jfet is similar to as parabolic curve. Clear है यहाँ तक?